Hello everyone. Now in today's class we will start with the geometry portion, that is lines and angle. In this chapter we will start with the theorem. Okay. Now in ninth class theorem has been introduced. You have to prove the statement of the theorem. Statement you know it very well. बट हाउ विल यू प्रूव इट कि जो आपको स्टेटमेंट पता है उसको कैसे प्रूव करोगे, दैट वी विल टेक इट इन टुडे क्लास. बट बिफोर वी विल टेक द थ्योरम कंसेप्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग दैट इन थ्योरम, if you will observe in your book, in the theorem में देखिए, in the theorem there is a mark of block, square block is there. Can you able to see it? This is a square block in a theorem. आपके पास ये square block है. So wherever the square block, that proof is in your syllabus. Okay, इसका syllabus में आपको proof करना है. And whatever be the other statement in which this block is not there, उसके अंदर आप उसका प्रूफ नहीं करेंगे. only the statement part you will take it. So block is there, so it means that its proof is in your syllabus. Okay, proof of this theorem is in your syllabus. So let's go for the theorem. Theorem 6.1 is, if two lines intersects with each other, then we have to prove that vertically opposite angles are equal. अब आप geometry में given to prove construction, if it is, then you will go for the proof. Okay, so you have to give the heading also. So these are the two lines which intersects at point O. तो आपका यहाँ पे given क्या हो गया? In given, you will write the given part very precisely. In short form you will write it. So here AB and CD intersect at O. So this is given. And to prove, आपको क्या प्रूव करना है? That is vertically opposite angles are equal. तो ऐसे में आप statement you will not write it. So instead of that, आप इसको नंबरिंग कर दीजिए. Put the numbering of the angles 1, 2, 3, 4. So vertically opposite angle means angle 1 equal angle 3 and angle 2 equal angle 4. ये प्रूफ करना है. Now in this theorem there is no construction, so हम construction heading we will not put it. Now next statement heading is proof. Let's see the proof. Since AB is a straight line, therefore, what does it mean? AB is a straight line, therefore angle 1 plus angle 4, angle 1 plus angle 4 equal 180 degree. What should be the reason? Linear pair. And take it equation 1. 1 plus 4 180 degree हो गया. Same way, if you will take similarly CD is a straight line. Therefore, अगर CD straight line है, so 4 plus 3 is also 180 degree. Again, reason is linear pair. This is equation 2. From equation 1 and 2, what result you will get it? दोनों ही 180 degree है. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what result you will get it? Angle 1 plus 4 equal 4 plus 3. ये cancel हो गया. So angle 1 equal angle 3. So one result you have got it, angle 1 equal angle 3. Now come to the angle 2 equal angle 4. Same procedure you have to take it. Same type of concept you will take it. Similarly, angle 1 plus angle 2 equal 180 degree. Linear pair. This is equation 3. And 1 plus 2 लिया,
so since we have already taken 1 equal 3, तो हमें क्या प्रूव करना है? 2 equal 4. So 1 plus 2 equal 180 degree. Now we will take 1 plus 4 and angle 1 plus angle 4 equal 180 degree. Again same reason, linear pair. Okay, so from third and fourth, 1 plus 2 equal 1 plus angle 4. So angle 1 will be cancelled out, 2 equal angle 4. So you have got the second result. Is it clear? This theorem, you have to give the proof like this. Now, come to the exercise 6.1, first question. It is given that these two angles sum is 70 degree, AOC plus EOB 70 degree. So I have written it as a number, angle 1, 2, 3, like that. And this is 40 degree given. Now you have to prove angle BOE. BOE means ये angle निकालना है. And reflects COE. COE reflects. This angle we have to find out. Reflects COE का मतलब अगर आप एंगल COE निकाल लेते हैं तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE मींस COE एंगल को छोड़कर बाकी सारे एंगल. सो एंगल इन अ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री. तो आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल COE में 360 माइनस वट एवर आंसर यू विल गेट इट ओवर हियर, उसको माइनस कर देंगे. ओके, सो लेट्स टेक द कंसेप्ट. AB is a straight line. AB is a straight line. So therefore angle 1 plus 2 plus 3 equal 180 डिग्री. ठीक है. अब यहां पे दिया हुआ है AOC plus BOE. AOC plus BOE is given as AOC plus BOE means angle 1 plus angle 3 is given as 70 degree. So instead of this we will put 70 degree. So angle 2, यहां से एंगल 2 कितना आ गया? 110 आ गया. तो एंगल 2 मीन्स COE. COE आ गया. अब रिफ्लेक्स COE यू हैव टू फाइंड आउट. सो रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस COE. दिस इज एंगल COE. ठीक है, 110 डिग्री. सो इट विल बी 250 डिग्री. 250 डिग्री आ गया. अब हमारा क्या रह गया? एंगल BOE रह गया. आपके पास एंगल COE आ गया. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट एंगल BOE? BOE कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेल मी. CD is a straight line. So these three angles sum is 180 degree. So you have angle 2 plus 3 plus 40 degree equal 180 degree. अब angle 2 is given. We have proved it here. 110. So 110 degree plus angle 3 plus 40 degree equal 180 degree. Now angle 3 is, shift the terms on the other side by shifting it 180 degree minus 150 degree, that is 30 degree. So angle 3 means this is angle BOE. Is it clear? Okay. Come to question 2. In question 2, it is given that this angle is 90 degree and ratio of angle A and B is 2:3. So since they are talking about the ratio, it means हम उसे 2x and 3x ले सकते हैं. Okay. So from the given figure, क्या आप बताएंगे कि A plus B equals to what? A plus B. From the given figure, angle A plus B equal 90 degree because this whole is a 90 degree. XY is a straight line. Or instead of A and B, we will substitute its value 2x plus 3x equal 90 degree. तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. 90 degree upon 5. So cancel it. You will get 16 degree. X equal 16 degree. ये आ जाएगा आपके पास. Let me 18 degree. You will get 18 degree.
as 18 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको एंगल सी निकालना है। सो फर्स्ट एंगल सी, बिफोर यू विल टेक एंगल सी, तो आप क्या करोगे, देयरफॉर एंगल बी इक्वल व्हाट, 3x, सो एंगल बी इक्वल 3 into 18 डिग्री, ओके, 18 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल 54 डिग्री आ गया आपके पास। अब आपको एंगल सी निकालना है। सो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, एंगल सी, देखो ये एम एन लाइन पे फॉल कर रहा है, सो यू विल राइट एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। Wherever possible, you have to give the reasoning also. Mn is a straight line, therefore B plus C equal 180 degree, and angle B we have taken it 54 degree plus C equal 180 degree. So from here, angle C equal 180 degree minus 54 degree. So C equal 126 degree. You will get it as 126 degree. This only we have to prove it. Is it clear? Okay. In question 3, it is given that these two angles are equal. So we have taken it as angle 1 and angle 2, and we have to prove that these two angles are also equal. अब आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल है, and here it is given ST is a straight line, तो हम इसे एंगल 3 मान लेते हैं, and this is angle 4, angle 3 and angle 4. ST is a straight line, so 1 plus angle 3 equal 180 degree, linear pair, and equation 1. Similarly 2 plus 4 equal 180 degree, linear pair, equation 2. अब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, so what result from 1 and 2, what result you will get it, 1 plus 3 equal angle 2 plus angle 4. अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है angle 1 equal angle 2, so instead of angle 1 we can write angle 2, so instead of angle 1 we can write angle 2. Okay, so here you will give the reason because angle 1 equal angle 2. आप angle 2 की जगह भी 1 लिख सकते हैं, it hardly matter, दोनों से आंसर आएगा, cancel it, you will get angle 3 equal angle 4, 3 equal 4, and at the end don't forget to write the actual angle name, therefore angle PQS equal angle PRT. Is it clear? Now come to the next question, number. Now question 4th. In question 4th, it is given x plus y equal w plus z, and you have to prove AOB is a straight line. AOB straight line कब होगी? जब उसका on the same side either x plus y 180 prove कर ले, or if we will prove w plus z equal 180 degree. So let's take the proof part. In a complete circle, what is the angle of a complete circle? अगर एक complete circle की बात करें, then what is the angle? It is 360 degree. So if we will take this point O as a dot, तो ये पूरा complete circle हो गया. So what result you will get it? X plus y plus z plus w equal 360 degree. Okay, equal 360 degree. Reason? Angle in a complete circle. Complete circle. Okay. So instead of x plus y is equals to w plus z. So instead of x plus y, we can write it w plus z. So this implies w plus z plus w equal 360 degree. Since it is given that because
x plus y equal w plus z. So instead of x plus y, we will put its value. Now observe it. Both the things are coming twice. So twice of w plus z equal 360 degree. So what should be w plus z equals to? From here, w plus z equal 360 degree upon 2. So it will be cancelled out. So you will get w plus z equal 180 degree. अब अगर हमारा w plus z equals to 180 degree है, so what does it mean? What does it mean? That this implies w plus z 180 degree. This implies AOB is a straight line. 180 degree तभी होगा जब वो straight line होगा. I think it's clear. ठीक है? Question 5 is very important question. Question 5 is very important. So this is very important. अब क्वेश्चन में देखिए, it is given that POQ is a straight line and this is perpendicular given. You have to prove ROS half QOS minus POS. So we will try to write the numberings here. ROS, we will write it angle 1, and QOS, we will write it angle 2, and POS को हम 3 ले लेते हैं. ओके, तो नंबरिंग से अगर करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. सो एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये प्रूफ करना है. नाउ कम टू द प्रूफ पार्ट. इन प्रूफ पार्ट इट्स वेरी इजी टू प्रूव इट. नाउ अगर आप देखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 इक्वल 1 प्लस 90 डिग्री. एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, 1 plus 90 degree, isn't it? Angle 2 equal 1 plus 90 degree. अब क्या कोई और एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है? This is equation 1. So angle 1 plus angle 3 is also 90 degree, isn't it? Angle 1 plus angle 3 is also equals to 90 degree, isn't it? तो हम यहां से क्या करते हैं? This is equation 2. So what result? You will put the value of 90 degree in equation 1. Put the value of 90 degree in equation 1. So what result you will get it? 90 डिग्री की जगह हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो आपके पास क्या आएगा? पुट द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम equation 2 in equation 1. We will put it. तो अब देखते हैं. इक्वेशन 2 से 90 डिग्री की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. Therefore, angle 2 equal 1 plus, instead of 90, substitute this value. 1 plus angle 3, ये आ जाएगा. Now solve it further. जितना हो सकता है इसको solve कीजिए. 1 plus 1, twice of angle 1 plus angle 3. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? एंगल 1 की वैल्यू चाहिए. सो शिफ्ट द वैल्यूज ऑन द अदर साइड. फ्रॉम हियर एंगल 2 माइनस एंगल 3 इक्वल ट्वाइस एंगल 1. हमें एंगल 1 चाहिए. सो व्हाट, हाउ विल यू राइट इट? फ्रॉम हियर एंगल 1 इक्वल, ये 2 अपॉन में चला जाएगा. सो हाफ एंगल 2 माइनस एंगल 3 इक्वल एंगल 1. ओके, और देखिए, ऑब्जर्व इट, वी हैव टू प्रूव सेम थिंग, इजंट इट? अब आप क्या करेंगे? यू विल रीराइट इट इन द एक्चुअल एंगल फॉर्म. देयरफॉर एंगल ROS इक्वल हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. आई थिंक इट्स क्लियर. ठीक है? Now come to the last question of this exercise. It is given angle XYZ. Angle XYZ equals 64 degree दिया हुआ है. And further they are telling in the question that XY is extended up to point P, up to P. तो X से लेकर Y की तरफ extend हो रही है लाइन.
x से y की तरफ, so from x towards y, so it is up to point P such that now here it is given YQ is the bisector of this angle PYZ. Bisector बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है, so it means angle 1 and angle 2 equal. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, so both the angles are equal to each other and this is 64 degree given. अब हमें क्या प्रूव करना है? XYQ, XYQ, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. If we will find out angle 2, तो उसको 64 में ऐड कर देंगे, we will get XYQ and reflex QYP. QYP reflex, इसका reflex, so हम एंगल 1 निकाल लेंगे, फिर 360 में से माइनस करके we will get the reflex angle also. Okay, so solution. Here सॉल्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि हमें फाइंड करना है, टू फाइंड करना है, दैट्स व्हाई वी विल राइट द सॉल्यूशन हेडिंग. अब हियर इट इज गिवन दैट XP is a straight line. XP is a straight line. It is given in the question. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, therefore इन सबका सम, therefore 64 degree plus angle 2 plus 1 equal 180 degree angle in a straight line. अब angle 2 and angle 1 both of them are equal. आपके पास ये दोनों equal दिए हुए हैं, तो हम instead of angle 1 we can write angle 2. So 64 2 plus 2 we can write it. Why? Because angle 1 equal angle 2 ये दिया हुआ है. Now twice of angle 2, 180 degree minus 64 degree, twice of angle 2, shift it on the other side. आपके पास ये आ जाएगा twice angle 2, 64, 116 degree. So from here angle 2 equal 58 degree. You will get it. Angle 2 equal 58 degree. अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है? XYQ. XYQ. एंगल 2 आ गया. So now angle XYQ equals 64 degree plus angle 2. Okay. So this is equals to 64 degree plus angle 2 from here. 58 degree and add them 122 degree. So XYQ you will get it 122 degree. QYP ये एंगल 1 है, ठीक है. तो एंगल 1 and angle 2 both of them are equal. It is given. So reflex angle QYP. What it should be? Reflex angle QYP equal 360 degree minus angle 1 and this is 360 degree. This angle 2 from here, this is also equals to angle 1. So minus 58 degree minus कीजिए 302 degree. 58 you have to find out reflex एंगल 1 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है. सो दैट इज 360 डिग्री माइनस दिस. आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.